With today's daily problem. What pattern? You have been given a pattern and a string. Basically, you have been given a pattern. It's also a string, and the string is also a string. But the string is a, you can say, string of words. So at last, you will need to separate these words, right? And you have to tell whether this string follows the same pattern. Now they have given a definition for follow, but let me tell you what the follow means. For example, A B B A. So A is basically representing dog. So the next A comes, it must represent dog. So there must be dog should be present in the string s when a again come. And let's say bb, so a and b are different, hence this cat and dog should be different. The second word should be different from first. Basically this pattern you have to follow: a b b a. So first let's a come, and then a is equal to dog, and then b should come, that should be different than a. So that's why it's cat. But then again b is repeating, means the thing which you have, like cat should be repeating. And now A is again coming. A was dog, so dog should be coming next. A B B A. A is dog. B is cat. Then B is cat. Now fish cannot be over here because A should always be represented by dog. Similarly, all should be equal. Here, not all are equal. So yeah, that's why it's false. So बेसिक क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए इजी मार्क्ड है। और इसमें हमें लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, हम टू मैप स्टोर करते चलेंगे। वी विल यूज टू मैप्स। किस लिए? एक मैपिंग होगी हमारी बिटवीन कैरेक्टर टू स्ट्रिंग की मैपिंग, ठीक है। सेकंड मैपिंग होगी हमारी स्ट्रिंग टू कैरेक्टर मैपिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है? आई थिंक यू माइट हैव गेस्ड, बिकॉज ये जो कैरेक्टर आपको पैटर्न में दे रखा है, राइट। फॉर एग्जांपल दिस ए बी बी है और डॉग है, ठीक है। इसको करेंगे हम, जब इसको स्टडी करेंगे तो मैं बोलूंगा कि ए की मैपिंग कर दो डॉग के साथ, और डॉग की मैपिंग कर दो ए के साथ। तो दीज आर लाइक बोथ डायरेक्शन में ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर दोबारा कहीं तुम्हें ए दिख जाए तो उसकी जगह डॉग आना चाहिए, ठीक है। दोबारा ए दिख गया तुम्हें तो उसकी जगह डॉग आना चाहिए। और दोबारा तुम्हें कहीं डॉग दिख जाए तो उसकी जगह पैटर्न में ए आना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली या टू डायरेक्शन मैपिंग। ऐसा वन डायरेक्शन नहीं चलेगा कि ए आ रहा है तो डॉग लिख दो, दोबारा ए आ रहा है तो डॉग लिख दो। पर मान लो यहाँ पे डॉग तीसरी बार लिखा हुआ है, मतलब जितने ए आ रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग तो डॉग है। पर ये कैट मेरा डॉग नहीं हो सकता, दिस कैट कैन नॉट बी डॉग, एंड दिस ऑल्सो कैन नॉट बी डॉग, बिकॉज केवल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ही डॉग आ सकता है। अब डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग ए ही आना चाहिए हमेशा, डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग बी नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डिफरेंट, समथिंग लाइक कैट, एंड दिस इज कैट, राइट। तो अगेन ये पहला हो गया। एंड देन वी सी कि बी आया, बी इज न्यू कैरेक्टर, तो बी की मैपिंग कर दो तुम कैट से, और फिर कैट की मैपिंग कर दो तुम बी से। फिर अगेन यू विल सी कि अच्छा दोबारा बी आ रहा है, तो अब हम बस चेकिंग करेंगे। बी आ रहा है तो इधर इस साइड कैट आना चाहिए, ओके। इस साइड कैट आ रहा है तो इस साइड बी होना चाहिए, ओके। दोनों चीजें अब ट्रू है तब हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। जल्दी से बना लेते हैं ये बहुत मैप्स अपने। बट उससे पहले आपको यू शुड बी एबल टू सेपरेट दिस वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यूज करेंगे ऑफ पी एंड एस पे लगा देंगे, और स्ट्रिंग एक डब्ल्यू बना देंगे, और एक वाइल योर पी इज गिविंग आउट दिस वर्ड, हम एक वेक्टर बना देंगे। लेट्स से वेक्टर ऑफ string vs, right? So vs dot push back, not cs, it's vs push back this w, right? And then just iterate over this 0 से लेके I says and p dot size। और चीज, first of all, like you have to check the size of both the string should be same, like p dot size. If p dot size is not equal to, let's say, the ws vs dot came, uh, then we'll return 0. Like there must be, it cannot be like over here there are four characters a b b a, there are five or six characters, like dog is again coming or cat is again coming. So this is not possible, something like that. So that's why this size should be equal, like for a b b a, then four words should be there, right? Okay, let's create our mapping. Character string m1, or other mapping is map of string comma character m2. Now we'll say key if map1 dot count
this P of I, the pattern you're seeing is present in the map, then you have to check the answer for this pattern which was present in the map. M1 of P of I is, if it's not equal to, your current V of S of I, Vs of I, you can just return out true. Sorry, false. Yeah. Similarly, you have to check for this P if um, M2 dot count, this string is present in that, Vs of I is present in that. So M2 of Vs of I is equal to P of I. If it's not equal to P of I, it will return 0. Otherwise, you can say, okay, just set your M2 of P of I, no, sorry, M1 of P of I is setting it to Vs of I, right? This is a string, and your M2 of Vs of I string is going up to character P of I. That's what you need to do, and then you can return 1 if everything is fine. Yeah, let's try to sum this up. String stream vs, yes, okay, yeah, it's getting accepted. Let's try to submit. So only thing was to generate all the string by the string, and then to check these conditions, like if this kind of condition, like a should correspond to dog and dog should correspond to a. So for example, if pa m1 dot pi means this a has previously existed, this will be checked over here that this a has previously existed. तो इसके पहले previously a में mapping थी dog की. So currently जो mapping आ रही है dog के लिए, let's forget about this, dog आ रही है, so that should be equal to this dog. It is true. So हम ये जीरो नहीं कराएंगे, बेसिकली आगे बढ़ जाएंगे. दूसरी चेकिंग भी जरूरी है कि अगर डॉग दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली ए आना चाहिए. एंड देन वी कैन सेट दिस, लाइक सेम ही है तो सेट कर सकते हो, और अगर न्यू है तो न्यू सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पड़ा ना मैप में. सो आफ्टर ऑल वी रिटर्न 1 अगर कहीं पे भी जीरो रिटर्न नहीं हुआ. दैट्स अबाउट इट. ओके बाय.